The planar density of the 110 plane in a BCC crystal with lattice parameter A is, ये हमारे पास BCC में 110 प्लेन है. अगर हम इसका एरिया देखना चाहें तो ये साइड A है और ये साइड है √2A, तो एरिया होगा √2 इंटू A स्क्वायर, और प्लेनर डेंसिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स divided by area, which is equal to √2 divided by A square. So option B is correct. Question 2. The number of atoms centered on 110 plane of a BCC unit cell is obviously 2 atoms. The 110 plane in the primary slip plane in BCC because it has, अब इस 110 प्लेन को हम प्राइमरी स्लिप प्लेन भी कहते हैं. उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट प्लेनर डेंसिटी. ऑप्शन सी. जो भी अगर आप प्लेनर डेंसिटी के लिए आप प्लेन कंसिडर करना चाहें 110, 100, 111, तो उसमें इस प्लेन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके पास एटम है, मिडिल एटम, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है इस प्लेन पे. द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए BCC क्रिस्टल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन बी 0.68. अगर हम सिंपल क्रिस्टल के लिए लेना चाहेंगे उसका पैकिंग फ्रैक्शन 52% होगा, और FCC के लिए जो है वो आपके पास आता है 74%. इसको हम फाइंड आउट भी कैसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय A क्यूब से, और यहाँ से फिर हम इस रिलेशन से एटॉमिक फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. FCC हैज़ ए हाईएस्ट APF देन BCC because in FCC atoms touch along the face diagonal. FCC is more efficiently packed. In a simple cubic structure, the APF is approximately option C 0.52. In the zinc blend ZnS structure, each Zn ion is surrounded by how many sulfur atom? ऑप्शन बी 4 सल्फर आयन, और स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल. द डायमंड cubic structure can be described as two interpenetrating FCC lattices displayed by option B. Diamond equal to 2 FCC lattice offset by A by 4, A by 4, A by 4, that is 1 by 4 along 1 plane. Each carbon has sp3 hybridization. Coordination number is 4. Atomic packing fraction for diamond is 0.34. Very open structure. In an n-type semiconductor, the majority carriers are electron. और n-type जो आपके पास n-type डोनर इम्प्योरिटी हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? फास्फोर, आर्सेनिक, सिलिकॉन. एड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी होल होंगे. फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड. बोरॉन डॉप्ड इनटू सिलिकॉन creates a p-type semiconductor because boron has 3 valence electron except one, creating a hole. Boron accepts 1 electron from silicon lattice, creating a hole. Majority carriers are holes. Fermi level shifts towards valence band. Boron is an acceptor impurity. बोरोन जो है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है. The Hall effect is used to determine which property of the semiconductor. हम यहाँ पे हॉल इफेक्ट के लिए जो वोल्टेज का फार्मूला है वो चेक करेंगे और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि
उसमें हम क्या क्या डिटर्मिन कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट की जो वोल्टेज है V इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाई एन ई डी। डी थिकनेस को रिप्रेजेंट करिए, ई चार्ज को, एन डेंसिटी को, और आई ऑब्वियसली करंट, एंड बी। तो अगर इसका साइन नेगेटिव होगा तो हम बताएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि जो टाइप है वो एन टाइप है। अगर इसका साइन वोल्टेज का पॉजिटिव आएगा तो वो पी टाइप है मटेरियल। और एन की से हम जो कंसंट्रेशन है, कैरियर कंसंट्रेशन, वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड कैरियर कंसंट्रेशन, इज करेक्ट। In Hall effect, if the Hall voltage is positive for a given current and magnetic field direction, the semiconductor is obviously p-type semiconductor. This is the definitive टेस्ट फॉर कैरियर टाइप। अगर आपने कैरियर टाइप फाइंड की किसी मटेरियल की तो हम हॉल इफेक्ट के थ्रू फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल ओबे विच स्टैटिस्टिक्स? फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक। और उसका फार्मूला आप लिख सकते हैं फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन का 1 over एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी प्लस 1 at t equal to 0 all state below Fermi levels are filled and above all empty. And electron obey Pauli exclusion principle. Electron are fermions and they are spin half particles. Photon and phonons are example of boson because they have integer spins. They obey Bose-Einstein statistics. Multiple bosons can occupy the same quantum state. No exclusion principle. Photon की spin हम लेते हैं 1 and photons are quasi particle with integer spin. The Pauli exclusion principle applies to only fermions. No two identical fermions can occupy the same quantum state simultaneously. Fermions, electrons, protons, neutrons are spin half particles. Boson, photon and phonons are not restricted. Many can share one state, so they obey Bose-Einstein condensate. And that's it.